In this video, we will discuss what is living. So let's learn. Living organisms show certain characteristic features like growth, reproduction, metabolism, cellular organization, and consciousness that are not shown by non-living beings. Living organisms show growth by two ways: increase in mass and increase in number. Reproduction. Reproduction is production of similar or almost similar living organisms. Metabolism. Metabolism is the total number of chemical reactions occurring in the living body. It is true production of energy. Cellular organization. Cellular organization deals with that all the living beings are made up of cells, and cell is the basic building block of life. Consciousness. Consciousness pertains to the ability of the living organisms to respond to the environment, and it shows awareness and sensitivity for the environment. So let's discuss it in more detail. So we saw in the video that there are 5 characteristics of living beings. First is growth, reproduction, metabolism, cellular organization, and consciousness. ग्रोथ 2 टाइप से देखने को मिलती है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर. इंक्रीज इन मास बेसिकली किन में देखने को मिलता है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. इंक्रीज इन नंबर बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हम बैक्टीरिया में देखते हैं एक सिंगल बैक्टीरिया है, वो डिवाइड हुआ 2 में, देन इट अगेन डिवाइड्स and become 4. So सिंगल बैक्टीरिया जो था वो 4 में डिवाइड हो गया. ये ग्रोथ तो हुई, लेकिन साथ में कैसी ग्रोथ हुई? इंक्रीज इन नंबर, नंबर में भी इंक्रीज हो गया. सो इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन नंबर. नाउ ग्रोथ इज ऑल्सो शोन बाय सम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो नहीं बोलेंगे, नॉन लिविंग. ग्रोथ इज ऑल्सो शोन बाय सम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. रॉक्स, माउंटेन्स. कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक सैंड है, सैंड ड्यून है, हवा चलती है उस पर और सैंड एक्युमुलेट हो जाता है, तो धीरे धीरे भी क्या होगा? साइज में इंक्रीज हो जाएगा. ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है ग्रोथ. सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो शोइंग ग्रोथ. सो वी कैन से ग्रोथ इज नॉट अ ट्रू डिफाइनिंग feature of living organisms because non-living organisms also show growth. Next is reproduction. Reproduction, we all know that is production of similar or almost similar organisms. All living organisms reproduce? No. There are certain exceptions to it, like infertile humans, worker honeybees, and mules. They can't reproduce. Although they are living, but they can't reproduce. एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, वो बिल्कुल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट देयर आर एक्सेप्शंस. सो रिप्रोडक्शन ट्रू डिफाइनिंग फीचर है? नहीं. इट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रू डिफाइनिंग फीचर बिकॉज ऑफ सम इनफर्टाइल ऑर्गेनिजम्स. थर्ड इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं सेल में, वेदर दे आर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ये आप बाद में पढ़ोगे. बेसिकली ये है स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके कोई लार्ज मॉलिक्यूल बना लें, या कोई बिग मॉलिक्यूल ब्रेक होके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना दे. इसमें क्या होगी? एनर्जी नीडेड होगी. इसमें क्या होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी. सो दीज केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सेल. तो सेल में होंगी, और सेल के बेसिकली किस में है? लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो मेटाबॉलिज्म में किसी में होगा? लिविंग में ही होगा, नॉन लिविंग में तो नहीं होगा. इसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज्ड. सो मेटाबॉलिज्म सेल में होगा, सेल लिविंग में होगी. सो मेटाबॉलिज्म इज द फीचर ऑफ ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लेकिन इट हैज सम. Next is cellular organization. Cellular organization means all living organisms are made up of cell,
cell combines to form tissues, tissues combine to form organ combine to form organ system, which finally combines to form organism. So जितने भी living organism हैं वो क्या है, cellular organization show करते हैं. So defining feature क्या हो गया life का, cellular organization. Consciousness means we can sense the environment, we can adapt according to the environment. Like in summers we live in cool conditions, in winters we live in warm conditions. Similarly जो plants हैं और animals हैं वो भी summer और winters के according अपना behavior, अपने living conditions change करते हैं. So we can sense the environment, but non-living things we can't sense. We can't sense the environment. So it is also a defining feature of life. That's all for today. Keep learning, keep practicing. Thank you.